And Right. my core areas are computer science and cloud computing, web technologies. So today I'll be presenting on complaints and appeals. Fine. So I'll be, without wasting any time, I'll be sharing my screen and presenting the topic. So okay, fine. So yes, in this particular topic, I'll be basically covering the norms of research, research ethics, complaints, what are the core practices, what is core, what is publication misconduct. I'll show you what could be the sample complaints. I'll show you how you can make a complaint, what could be the flowchart of the complaints, and I'll conclude it with appeals. So, starting off, first of all, what are the norms of research? Fine. I'll be explaining these terms because if these norms are satisfied, then there is no need of complaints and appeals. But basically, we do not adhere as a researcher to these norms, and that is why complaints and appeals arise. So, what basically is that when most of the people thinks of ethics, they distinguish between what is right and what is wrong. Fine, and there may be several things, several ethics which we need to adhere by. Fine. The first norm is that it promotes the aim of research. For example, if I'm doing my research with truthfulness, with knowledge, fine, I'll be avoiding the errors. Fine. There will be prohibitions against fabricating, falsifying, and misrepresenting the research data to promote the truth and minimize the error. So these are the norms that I need to follow again to constitute my academic integrity. Fine. So moving forward, uh, since the research often involves a great deal of cooperation and coordination, fine, and that is might be a research might be carried between different disciplines, and it might be interdisciplinary research. So there are different collaborations that needs to be there. Fine. So how there needs to be a fairness among all these disciplines, among all these collaborations, and that needs to be done. And that is another very important norm of research. Fine. So there are very important ethical norms in research, such as when I'm coming to copyright, when I'm coming to patenting a particular paper, policies, data sharing, fine, confidentiality. So all these things have to be kept in mind whenever I am presenting something somewhere. Fine. So most of the researchers, what they want to do is that they want to receive credit for their contribution, but they what they also don't want is that their data need not to be stolen. Fine. Or it is disclosed prematurely to somebody else. So this is another very important norm of research. So moving forward, and there are, Anand sir, yeah, ma'am, Anand sir, sorry to interrupt you, but sure, ma'am. students are requesting to use bilingual language in English and Hindi only if you are comfortable, sir. Okay, I'll try my best. Okay, the Thank you, third, sir. okay, third norm is that there needs to be ethical norm to ensure that the researchers can be held accountable to the public. For example, I'm telling you that suppose uh, I am doing a research, मैं एक research कर रहा हूँ, and there are certain forefronts of that particular research, that how it is going to affect the public, how it is going to affect in the public arena. Fine. So in that particular case, I need to be held accountable कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ. Fine. I need to, I'm accountable for that particular matter. And for example, if I'm doing a research, it needs to have some moral and social values. जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमसे एक बात पूछी जाती है कि ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं इसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा, व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस ऑन द सोसाइटी. Fine, what would be the effect on the society. So you have to keep in mind that you are abiding by कि आप इन सब चीज़ों का, human rights का, बेशक वो animal human rights हो, बेशक वो human rights हो, fine,
एनिमल राइट्स हो, एनिमल वेलफेयर राइट्स हो, you need to abide by that. For example, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप you are doing a clinical research, fine, and it involves some animals, fine, so you need to have some social responsibility towards that particular animal also, fine. So ये सारी चीजें हमें consider करनी है whenever we are doing research. A researcher needs to be accountable for his social and ethical uh, issues that he is presenting to the public. Fine. So next thing is that जो हमारी next research है, जो next हमारा norm है, uh, ethical lapses in research can significantly harm human and animal subjects. Fine. For example, a researcher who fabricates a data in a clinical trial may harm or even kill patients. मैंने अभी यही आपको बताया कि मान लीजिए आपने डेटा को फैब्रिकेट किया, ठीक है, अपने आप से उसे बनाया, उसको अपने आप से मिसयूज किया, फाइन, किसी भी ट्रायल के अंदर, और आपने क्या किया, यू माइट हार्म और किल द पेशेंट्स, फाइन. So you have to abide by all the rules. देखिए जैसे यहाँ पे rules है, a researcher who fails to abide by the regulations and guidelines that are related to radiation or biological safety may jeopardize his health or the safety of the staff and student. मतलब वो क्या कर रहा है, वो सभी की health पे को stake पे रख के काम कर रहा है कि अगर वो proper rules को follow नहीं कर रहा, biology के rules को follow नहीं कर रहा before conducting a particular experiment, fine, then he's putting everything at the stake, fine. So अब अगर हमने सारे नॉर्म्स देखे कि हमारे क्या क्या हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे एनिमल वेलफेयर है, हमारे हमारा जो अगर क्या कहते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी है, फाइन, हमें किसी तरह का फैब्रिकेशन नहीं करना, वी नीड टू बी ऑनेस्ट. If we are not abiding by these, a lot of researchers are not abiding by these, so there are code and policies that are there for the research ethics, fine. So given the importance of ethics for the code of research, it should come as no surprise that many different associations are there, many different government agencies are there, many different universities are there who have their particular ethics, fine, who have laid the particular ethics that we need to abide by. तो हर यूनिवर्सिटीज ने फॉर एग्जांपल यूजीसी ने हमारे डिफरेंट नॉर्म सेट किए हुए हैं दैट वी हैव टू अबाइड बाय द रिसर्च एथिक्स, फाइन. So I think this particular concept, this particular point is clear that what we need, these are the norms that needs to be followed, and if you're following these norms, then complaints will not arise and appeals will not arise. But we as researchers, we are not fulfilling these particular areas. So now moving forward, now what are research ethics? I'll just give a small demonstration on research ethics, but just tell you a bit about research ethics so that we can move to the core area, that is complaints. Now, what are ethics? Research ethics, they provide the guidelines for responsible conduct of research. कि मैं जो भी research कर रहा हूँ, मेरी उसकी एक responsibility है कि मैं उसे एक responsible way में कर रहा हूँ. Fine. In addition, it educates and monitors the scientists that are conducting the research to ensure a high ethical standard. When I'm doing a research, there is an ethical standard. Ethical standard is that nobody can teach you. You either learn it at home from the college, fine. uh, it is that something is there that is within you, that I have to do this work with honesty, ठीक है, कि मुझे काम honesty के साथ करना है. The following is a general summary of some of the ethical principles कि हमारे पास क्या क्या ethical principles हैं. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारे पास honesty, if you are honestly reporting the data, अगर आप results को honestly report कर रहे हो, methods honestly use कर रहे हो, procedures जो है honestly use कर रहे हो, you are not fabricating, falsifying and misrepresenting the data, mispresenting the data, fine. So these are particular areas of honesty. Next is objectivity, that you strive to avoid bias in experimental design and data analysis, कि आप किसी तरह का bias result नहीं show कर रहे, fine, when you are working with a particular experiment. Then the next is integrity, that you keep your promises and agreements with sincerity, and you strive for the consistency of thoughts and action, that whatever you are presenting, अगर आप उसे अच्छे ढंग से ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिविटी के साथ इंटीग्रिटी के साथ बता ही नहीं रहे, अगर उसमें एकेडमिक इंटीग्रिटी नहीं है, दैट इज अ इम्पोर्टेंट वर्ड कि यूजीसी ने एक वर्ड कहा है, दैट इज एकेडमिक इंटीग्रिटी, कि आप जो भी काम करें उसे ऑनेस्टी से, ऑब्जेक्टिविटी से, उसे इंटीग्रिटी के साथ करें. अगर आप एज ए रिसर्चर इन सारी चीज़ों को फॉर्मुलेट करते हैं तो हमें कंप्लेंट्स और अपील्स पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अगेन आई एम सेइंग दैट
So there are different things that people do is that they publish something without no informed consent. Find simultaneous publication, simultaneous submissions, duplicate submissions कि आप उसे अलग अलग copies अलग अलग जगह दे रहे हैं. Find there are different conflicts of interest. You are doing data fabrication, plagiarism. So all these terms, they should not be done. Fine, when you are doing a research. Fine. So now moving forward, अगर मैं रिसर्च एथिक्स की बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास, दैट इज केयरफुलनेस. दैट आई शुड अवॉइड द केयरलेस एरर्स, नेग्लिजेंस. फाइन. मुझे प्रॉपर वे के अंदर जो भी मेरे क्रिटिकल वर्क हैं, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, उन्हें क्रिटिकल वर्क्स को बिना नेग्लिजेंस के साथ काम करना चाहिए. फाइन. I need to able to be able to share my data, my ideas and tools. And one most important term is that I should be open to criticism and new ideas. एज अ रिसर्चर फाइन, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आपके पास एक आइडिया है. फाइन. एंड देयर माइट बी डिफरेंट पीपल्स who have who might not like that particular idea. So you should be open to criticism. लेकिन आपको उसको भी एक पॉजिटिव वे के अंदर लेना चाहिए, और उससे भी आप जो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव्स निकाल सके, कि अगर एक दूसरा रिसर्चर आपको कुछ एक व्यू दे रहा है, then you should be able to relate to those particular views, and you should take that criticism in a very positive manner. Fine. And then the next is that you have a respect for intellectual property. Fine. मैंने पहले भी बताया, एज अ रिसर्चर what we need is that कि हम अपना जो वर्क है उसका भी एक तरह से हम उसका एक कंट्रीब्यूशन लें. ठीक है. और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे आइडिया कोई प्री मेच्योरली, मतलब मेरे से पहले ही उसको कोई पब्लिश कर दे. फाइन. सो देयर हैज टू बी अ रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. I should honor the patents, copyrights, and other forms of intellectual property. I should not use unpublished data or methods or results without permission. कि मैं किसी और के डेटा को विदाउट परमिशन दिखा रहा हूँ, उसको क्रेडिट नहीं दे रहा. फाइन. एंड आई शुड नेवर plagiarize. So these are the important terminologies which comes under research ethics. Another important part is confidentiality. Basically, I need to protect the confidential communication. For example, there are military secrets or there are patient records. आपने जैसे पीछे देखा होगा कि फेसबुक का जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, उस पे वहाँ की यूएस की कोर्ट ने जो है they took him into the court because he used the data of so many people. And because we are communicating on the Facebook and we are sharing a lot of personal information, fine. And if somebody is using that personal information, अगर वो उसका use कर रहा है कुछ अपने benefits के लिए, then that should not be done. Fine. So again, the next is responsible publication. You should publish in order to advance the research and scholarship, and not to just advance your own career. Fine. कि आप सिर्फ अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचें, कुछ इम्पोर्टेंट जो है रिसर्च के बारे में, कि ये जो काम है ये हमारे देश को, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी बात करूं कि एक रिसर्च हम कर रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी को ये कहाँ पे लेके जाएगा. Fine. So these are the research ethics, fine, that needs to be followed, and I've told you about the research norms. Now, I am not uh, if I'm not working on these two particular terminologies, if I'm not working on these two particular terminologies, fine, कि मैं ना तो norms को follow कर रहा हूँ, ना मैं research ethics को follow कर रहा हूँ, then somewhere down the line I am making myself available for complaints. Fine. I am making myself available for appeals. तो अब ये देखते हैं कि ये जो टॉपिक है, अब यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है ये स्टार्ट होता है कंप्लेंट्स का. तो कंप्लेंट्स बेसिकली हैं क्या? देखिए, कंप्लेंट्स दे मे रिलेट टू अ फेलियर ऑफ अ प्रोसेस. फाइन. ये एक प्रोसेस है आपकी, वो फेल हो रही है. फाइन. फॉर एग्जांपल देयर आर लेंथी डिलेज और मिस जजमेंट, कि देयर इज अ मिस जजमेंट, फॉर एग्जांपल एन इम्प्रॉपरली अप्लाइड रिट्रैक्शन नोटिस. फाइन. दे मे आल्सो रिलेट टू ऑथर और रिव्यूअर मिसकंडक्ट. मतलब दोनों तरीके से हो सकती है, ऑथर भी दे सकता है, रिव्यूअर भी दे सकता है. And the complaints they may be made by anyone including author, reviewers and readers. तो भाई आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्लेंट कोई भी कर सकता है. आपने एक पेपर फॉर एग्जांपल एक जर्नल में दिया, फाइन, देयर माइट बी अ कंप्लेंट फ्रॉम सम अदर फेलो विसल ब्लोअर. फाइन. जिसे हम कहते हैं कि ही रेज दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट. फाइन.
सो द कंप्लेंट्स कैन बी मेड बाय एनीवन, कोई भी जो है, अगर मैं एक प्रॉपर वर्क को नहीं शो कर रहा, ठीक है, तो कंप्लेंट्स कैन बी मेड बाय एनीवन इंक्लूडिंग द ऑथर्स, रिव्यूअर्स, रीडर्स, फाइन। और ये जो कंप्लेंट्स हैं ये ऑथर या रिव्यूअर के भी मिसकंडक्ट के रिलेटेड हो सकती हैं। सो आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर ऑन व्हाट बेसिकली इज कंप्लेंट्स। सो नाउ, अब हमने जैसे कंप्लेंट्स डिस्कस करी, अगर मैंने किसी को कंप्लेंट करनी है, व्हेन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, जब मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ और मैंने फॉर एग्जांपल पब्लिकेशन के बारे में कंप्लेंट करनी है, किसी पेपर के बारे में कंप्लेंट करनी है, देन हु आई नीड टू अप्रोच टू, मैं किसको अप्रोच करूंगा? फाइन, there is a committee that is called as COPE. This is very important. This is called as COPE, that is Committee on Publication Ethics. Fine. So it is committed to educating and supporting the editors. Editors को support कर रही है, publishers को, and those involved in publication ethics, with the aim of moving the culture of publishing towards one where ethical practices they become a normal part of publishing culture. कि ये क्या क्या कर रही है कि जितने भी लोग हैं पब्लिशिंग के अंदर, फाइन, ये जो कोप कमेटी है दैट इज गोइंग टू हेल्प ईच वन ऑफ देम। फाइन, कि अगर मान लीजिए आप किसी भी जर्नल में फॉर एग्जांपल आप एक पेपर देते हैं, देन यू शुड चेक दैट वेदर दैट जर्नल इज फॉलोइंग द कोप रूल्स, कि वो कोप की रूल्स को, कोप की कमेटी को जो है वो जो है फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सो कोप इज बेसिकली अ कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। सो what basically is it in the कोप के अंदर क्या है, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, किस किस तरह की कंप्लेंट हो सकती हैं, आई विल शो यू विद द एग्जांपल्स। सो आवर अप्रोच इज फॉर्मली इन द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग थ्रू एजुकेशन, रिसोर्सेज एंड सपोर्ट ऑफ आवर मेंबर्स अलोंगसाइड द फॉस्टरिंग ऑफ प्रोफेशनल डिबेट इन द वाइडर कम्युनिटी। देखिए, जो ये कोप है कमेटी, इसका मेन एम ही क्या है कि ये जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको हेल्प करेगी, फाइन, ताकि हमारा जो काम है मैं उसकी ग्रोथ को फॉस्टर कर सकूं, फाइन, उसे और तेजी से और उसे एक प्रोफेशनल वे के अंदर उसके अंदर काम कर सकूं, फाइन। सो दिस इज बेसिकली द कमेटी दैट इज कॉल्ड एज कोप। नाउ, जब हम कोप की बात करते हैं तो कोप की कुछ कोर प्रैक्टिसेस हैं, कोप के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं कोप की कोर प्रैक्टिसेस। सो each journal, each publisher, they should abide by these particular core practices of the code. So the core practices were developed in 2017, replacing the code of conduct. Fine. तो ये अभी हमारे पास रिसेंटली इसकी कोर प्रैक्टिसेस जो हैं डेवलप हुई हैं। They are applicable to all the people that are involved in publishing scholarly literature, editors, and the journals, publishers, and institutions. फाइन, तो अलग अलग जगह पे जितने भी आप स्कॉलरी पेपर देते हैं, एडिटर्स देते हैं जर्नल्स के अंदर, फाइन, तो ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो जो कोर प्रैक्टिसेस हैं, दे शुड बी कंसिडर्ड अलोंगसाइड स्पेसिफिक नेशनल एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट and are not intended to replace these. All the even international journals, fine, they abide by this particular core committee. ये basically जो हमारी COPE है, ये 1997 में that was given by the Medical Association of UK. Fine, so that is how it came into existence. So journals and publishers, they should have robust and well described publicly document in all the practices in the following areas of the journal. अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कोप है ये किन किन एरियाज में हमें जो है हेल्प करेगा। सो पहला है हमारा, दैट इज एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है, तो एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट के अंदर क्या है कि देखिए, जो हमारा जनरल है जिसमें भी आप पेपर देते हैं, इट शुड हैव अ क्लियरली डिस्क्राइब्ड प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द एलिगेशंस। भाई, आपने कंप्लेंट करी, यू रेज अ कंप्लेंट, यू आर द विसल ब्लोअर, आपने कंप्लेंट रेज करी, अब वो कंप्लेंट कैसे हैंडल होगी, एक उसका एक क्लियर फॉर्मेट, उसका एक क्लियर पिक्चर जो है वो जनरल को बताना पड़ेगा। ही शुड हैव अ क्लियरली डिस्क्राइब प्रोसेस, कि अगर वो एक अच्छा जनरल है तो वो बताएगा कि कैसे आप उसकी एलिगेशंस को, आप कोई भी एलिगेशंस लगाते हैं, आप कोई भी फॉर एग्जांपल उस पे किसी तरह का आई वुड से कि आप कोई भी उससे कुछ पूछते हैं कि हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल, आपने मेरा पेपर कैसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने मेरी इमेज ऐसी थी, इस इमेज को प्रॉपर पब्लिश नहीं किया। फाइन, तो जितनी भी एलिगेशंस हैं ये किस तरह से
वो जनरल के पास एक प्रिस्क्राइब्ड वे होना चाहिए कि वो किस तरीके से इन सारी एलिगेशंस के साथ डील करेगा. फाइन. सो जनरल्स मस्ट टेक सीरियसली द एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट प्री पब्लिकेशन एंड पोस्ट पब्लिकेशन. पब्लिकेशन से पहले भी और पब्लिकेशन के बाद भी जो जनरल्स हैं इन सारी एलिगेशंस को प्रॉपरली डील करेंगे. उनके पास एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए. फाइन. कि दिस इज द वे दैट आई एम गोइंग टू हैंडल दीज एलिगेशंस. Fine. So policies, they should include how to handle the allegations from the whistleblowers. मैंने आपसे वर्ड पहले भी डिस्कस किया है कि जिसने एलिगेशन लगाया उसको हम कह रहे हैं विसल ब्लोअर, कि उसने एक तरह से जो विसल ब्लो करी कि ये जो चीज़ आपने ठीक नहीं करी. फाइन. तो एक जनरल में पॉलिसीज होनी चाहिए कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को जो है हैंडल कर रहा है. फाइन. तो पहला हमारा क्या है, एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट, दैट इज अ कोर प्रैक्टिस. दूसरा हमारा क्या है, ऑथरशिप एंड कंट्रीब्यूटरशिप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किसने कितना काम और किस कैपेसिटी में किया. आपने देखा होगा कि कई बार वो रिसर्च में बहुत जगह ऐसा होता है कि देयर आर पीपल जिनका बहुत, फॉर एग्जांपल दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, आई वुड से, इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. उनका स्ट्रेंथ है, होल्ड है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में. फाइन. तो वो क्या करते हैं कि पेपर आपने लिखा, बट दे आर आल्सो टेकिंग देयर नेम्स. फाइन. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए भाई, ट्रांसपेरेंट वे है कि किसने कितना काम किया, किस कैपेसिटी में किया. फाइन. एंड देयर शुड बी इन प्लेस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑथरशिप एंड द कंट्रीब्यूटरशिप. कि कैसे अगर मेरे पास ये डिस्प्यूट आ जाता है कि कल को एक ऑथर कह देता है कि हाउ हाउ यू हैव नॉट टेकन माय नेम, ठीक है, आपने मेरा नाम इस जगह पे नहीं लिया. तो इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्प्यूट दैट अराइज, तो वो डिस्प्यूट जो है वो कैसे वो जो है हैंडल होगा. फाइन. तो ये भी हमारा सारा कहाँ पे है, दैट इज इन दिस पर्टिकुलर कोर प्रैक्टिसेस ऑफ द कोर्ट. So I think we should move forward now. So the next part is complaints and appeals. That is the main area, but we cannot discuss it straight away. Fine. तो complaints and appeals के अंदर हमारे पास क्या है, generals should have a clearly described process for handling the complaints against the general, its staff, editorial board and publisher. तो देखिए ये भी जो है जो जनरल है उसको बताना ही बताना पड़ेगा कि अगर आप किसी तरह की कंप्लेंट कर रहे हैं उसके स्टाफ के अगेंस्ट, उसके बोर्ड के अगेंस्ट या उसके पब्लिशर के अगेंस्ट, तो उसके पास क्या प्रोसीजर है कि वो आपको कैसे जवाब देगा. फाइन. एंड देयर माइट बी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट और कंपीटिंग इंटरेस्ट. फाइन. ये क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, देर आर, और एक प्रोसेस होनी चाहिए कि आप किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक ऑथर्स के बीच में, रिव्यूअर्स के बीच में, एडिटर्स के बीच में, ठीक है, आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द पब्लिशन. So these are the important terminologies that are related to the core practices. तो ये हमारे पास 10 core practices हैं. Again, the fifth one is data and reproductibility. देखिए, these need to be understood very thoroughly. If we are understanding these particular terminologies thoroughly, तभी हमें पता लगेगा कि हमने कहाँ गलती करी है, ठीक है, how we can make a complaint, how we can raise a complaint, how we can raise an issue. But first and foremost, we should know where I'm lacking. Fine. If I'm lacking, I'm lacking in what place. हमें ये बातें पता होनी चाहिए. तो data and reproductibility हमारी क्या है? The general should include the policies on data availability and encourage the use of reporting guidelines and registration of clinical trials. कि आप जो भी डेटा यूज कर रहे हो, फाइन, उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए दैट यू नीड टू फॉलो. अगर आप ऐसा फॉलो नहीं कर रहे और आपने कुछ पब्लिश कर दिया, देयर माइट बी समवन who might raise a finger on that particular thing, that how you have done that, how you have produced the data. Fine. Then there is ethical oversight. The ethical oversight should include, but it is not limited to the policies on consent. Fine. मैंने आपसे डिस्कस किया था जब हम रिसर्च एथिक्स की भी बात कर रहे थे कि अगर आपने इफ यू आर यूजिंग एनी एनिमल्स, फाइन, देयर हैज टू बी एथिकल कंडक्ट ऑफ रिसर्च यूजिंग ह्यूमन सब्जेक्ट. यू आर हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा, सो आपको एथिकल ओवरसाइट को जो है ओवरसी नहीं करना, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है. फाइन. So now moving forward, then there is intellectual property.
What it is saying that all the policies on intellectual properties, including the copyright and publishing license, they should be clearly described. जितने भी journals हैं उनके copyright publishing licenses they have to be clearly described. And any cost associated with publishing should be obvious to the authors. अगर हम कुछ किसी जर्नल में कुछ पब्लिश करा रहे हैं, what would be the cost? It should be very clear and concise. ठीक है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. What constitutes plagiarism and redundant overlapping publication? They should be specified. कि क्या plagiarism आ रहा है, कि कहाँ से आपने copy paste किया है, कोई redundant overlapping है, fine, तो it should be specified. And the next is general management. A well described and implemented infrastructure is essential, including the business model, policies. Fine. So, if I am managing a general, I should have a proper infrastructure. मेरे पास होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मेरे पास एक एडिटोरियल बोर्ड होना चाहिए, पब्लिशिंग स्टाफ होना चाहिए. I should be clear on these particular terminologies whenever I am using the general. Fine. So these are the core practices which Cope lays down. कि Cope ने ये core practices जो है lays करी हैं, जो हमें सारे journals को ये follow करनी चाहिए. तो next है हमारा peer review process. All the peer reviews they must be transparently described and well managed. जितने भी हमारे peer reviews हैं वो transparent होने चाहिए. Journals should provide training for the editors and reviewers and have policies on diverse aspects of peer review. अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी पेपर देते हैं, फाइन, और देयर इज अ रिव्यूअर who says that your paper is not good, fine, then you can appeal against that. आप उसके लिए अपील कर सकते हैं, फाइन. तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा आप कैसे अपील कर सकते हैं, what could be the process, पर हमें पता होना चाहिए कि this terms exist. Next is post publication discussions and corrections. जो generals हैं they must allow debate on post publication either on their site through letters or editors. ऐसा नहीं कि एक बार आपने एक पेपर पब्लिश कर दिया, there might be some issues after post publications. तो generals के पास जो है एक proper way होना चाहिए कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को वो handle करेंगे. So these are the core practices which the generals need to follow as laid down by Cope, जो कि हमारी एक basic committee है on publication ethics. So now moving forward, what could be the complaints? So अभी जो मैंने आपसे चीजें बताई, these are the base. If the base is not clear, we cannot understand what are complaints. So the complaints देखिए क्या क्या हो सकती हैं. There could be suspicion of an ethical problem with a manuscript. ठीक है कि आपने एक manuscript दी, उसके साथ ethical problem है क्या? It is including undeclared conflicts of interest. कि उसके अंदर undeclared conflicts of interest हैं, ठीक है. उसके अंदर false ethical declarations हैं, आपने कुछ images use करी हैं without consent और copyright और without permission. अगर आपने ऐसा कुछ भी use किया है तो कोई भी आपके against complaint कर सकता है, ठीक है. Suspicion of unethical image manipulation in a published article. कि आपने एक article for example एक article के अंदर कोई image दी, fine, and there is a suspicion of an unethical image, fine. Suspected manipulation of the publication process. या अगर जैसे आपने अभी पीछे भी FTP के अंदर जो सुना हो different व्यूअर्स को कि there are concepts of self plagiarism. ठीक है कि आप अपने ही एक काम को दोबारा दोबारा बार बार बता रहे हैं, ठीक है, तो दैट अगेन कॉन्स्टिट्यूट्स अंडर सेल्फ प्लेगरिज्म. आप डुप्लीकेट जो है कॉपीज प्रेजेंट कर रहे हैं. देयर आर सैलरी स्लाइसिंग और एक्सेसिव सेल्फ साइटेशंस, या आप किसी बड़ी स्टडी का जो डेटा है छोटी छोटी जगह पे उसे दिखा रहे हैं. तो ये सारी अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स हैं विच कैन बी देयर, फाइन. कि अगर आप इसमें से मतलब कुछ भी इफ यू आर डूइंग समथिंग in this particular scenario, then somebody might raise a complaint against you, ठीक है. But you can also raise a complaint against the journals also कि अगर वो आपके पेपर को properly publish नहीं कर रहे, आपकी जो आपने image दी है they are manipulating that particular image, आपके reviewing time को time लग रहा है, आपके reviewing of the paper is taking a lot of time, a long delay, then there might be other things that might you can do a complaint against the journal. So moving forward now, so I think these terms will be clear to you, but I'll just demonstrate them before coming to again to complaints. So if I'm talking about publication misconduct, they include fabrication, plagiarism, falsification,
फाइन इनएप्रोप्रिएट ऑथरशिप। हमने पढ़ा है कि प्लेगरिज्म का क्या मतलब है, कि हम किसी और के आइडियाज को, थॉट्स को, डेटास को, फिगर को उसके बिना उसको क्रेडिट दिए हुए, ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम उसके पब्लिश वर्क को जो है क्रेडिट नहीं दे रहे, हम फैब्रिकेशन कर रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं कि हम डेटा और रिजल्ट्स को अपने आप से बना रहे हैं विदाउट डूइंग द रेलेवेंट रिसर्च इन अ पर्टिकुलर एरिया। Fine, and there may be a process of falsification, कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द डेटा इंटेंशनली, कि हम एक पर्टिकुलर एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग अ रिसर्च ऑन ऑनलाइन मार्केटिंग एंड आई वांट कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैं चाहता हूँ कि दिस सॉर्ट ऑफ रिस्पोंडेंट्स को मैं जो है हाई वैल्यूज के अंदर शो करूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई माइट बी ड्राइंग सम सॉर्ट ऑफ मिसलीडिंग कंक्लूजन्स. So then there are issues when I'm talking about publication misconduct. There are inappropriate authorship. Fine. Authorship is appropriately based on the its contribution. लेकिन कई बार हमारे पास क्या inappropriate authorship है, ये भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से inappropriate authorship हो सकती है, क्या reasons हैं उसके, और किस तरह की complaints raise हो सकती है. एंड देन देयर आर डुप्लीकेट एंड मल्टीपल सबमिशंस, कि आप जो है पेपर को जो है अलग अलग जगह फाइन आप उसे सबमिट कर रहे हैं, फाइन सबमिटिंग द सेम मैन्युस्क्रिप्ट विद माइनर डिफरेंसेस, यू आर डूइंग दैट, फाइन. सो दैट इज अगेन पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, कि अगर किसी जनरल ने ये चेक किया दैट यू आर यूजिंग द सेम पेपर, कि आप उसमें छोटा सा स्टैटिस्टिकल टूल चेंज करके कुछ यहाँ पे भी दे रहे हैं, जनरल में, जनरल बी में भी दे रहे हैं, फाइन. सो यू आर calling for some serious complaints. Then there are overlapping publication. It refers to the practices of publishing a paper that overlaps substantially with one already published. कि आप जो है कोई पहले ही पेपर वो है बना हुआ है, पब्लिश्ड है, और उसके ऊपर आप भी क्या कर रहे हैं, कुछ अपना उसके अंदर ऐड करके यू आर ओवरलैपिंग दैट पर्टिकुलर पेपर. मैंने आपसे अभी डिस्कस किया सलामी पब्लिकेशंस. इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ स्लाइसिंग द डेटा फॉर फ्रॉम लार्ज स्टडी, फाइन, could have been reported in a single paper. आप एक बड़े पेपर को छोटे छोटे उसमें डिवाइड करके जो है अलग अलग वे में शो कर रहे हैं, फाइन. Then there is inappropriate authorship. Authorship is not appropriately assigned based on the author's contribution. तो ये सारे जो हैं these all terms they come in publication misconduct. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, we are calling for complaints. So now moving forward, now this is a very important slide. So basically this is publishing ethics. देखिए ये जो है हमारी स्लाइड, दिस इज गिवन बाय कोर्ट, दिस इज गिवन बाय द कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, इनकी रिसर्च फाइंडिंग है. तो दे आर एक्सप्लोरिंग द पब्लिकेशन एथिक्स, फाइन, इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस. तो 64% इसका क्या था, एड्रेसिंग द लैंग्वेज एंड राइटिंग क्वालिटी विद रिमेनिंग इंक्लूसिव, फाइन. फिर वो कह रहे हैं डिटेक्टिंग प्लैगरिज्म एंड पुअर एट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड्स. ये जो पब्लिकेशन एथिक्स के अंदर जो भी मतलब हम पेपर दे रहे हैं, फाइन, कि उसके अंदर कितना कितना परसेंटेज है अलग अलग सिनेरियोज का. तो प्लैगरिज्म डिटेक्ट करना, पुअर एट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड्स, दे कॉन्स्टिट्यूट अ लॉट लॉट, दैट इज 58%. recognizing and dealing with bias in reviewer comments, that is again 55%. Fine, that is a very important issues. और फिर है हमारे पास issues around how the authors receive and respond to criticism. That is again given a lot more value, that is 54%. And self-plagiarism. So these are all the publication ethics. And these are the ethics challenges that are faced by today's general editors. कि क्या क्या उनके पास challenges हैं. तो आप ये देखिए, यही सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस करी हैं, कि सेल्फ प्लेगरिज्म है, ठीक है, कि हमारे पास प्लेगरिज्म है, reviewing proper नहीं है एक पेपर की. So these are the main gray areas that needs to be addressed. So now moving forward, now I'll show you the sample cases, fine, the sample cases. For example, देखिए पहला देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे हम जितनी भी स्लाइड्स यूज कर रहे हैं, मैंने इसका एक प्रॉपर सोर्स दिया है, फाइन, सो दैट इट डजंट कम एज प्लैगरिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड और हमें पता होना चाहिए कि हम किस जनरल के ऊपर बात कर रहे हैं, फाइन. सो स्प्रिंगर इज अ वेरी वेल नोन जनरल. सो अगर मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि देयर इज अ फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंप्लेंट अबाउट साइंटिफिक कंटेंट,
कि आपने जो साइंटिफिक कंटेंट दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल एन अपील अगेंस्ट रिजेक्शन, फाइन, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है देखिए. द एडिटर इन चीफ और हैंडलिंग एडिटर ही कंसिडर्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, फाइन, द रिव्यूअर रिपोर्ट्स एंड डिसाइड, जो रिव्यूअर है वो रिपोर्ट कर रहा है और डिसाइड करेगा कि अगर आपका कुछ भी पेपर रिजेक्ट हुआ है, द डिसीजन टू रिजेक्ट शुड स्टैंड और नॉट. एक और वो दूसरा ओपिनियन लेगा, ठीक है. द अपील शुड बी कंसिडर्ड. द कंप्लेंट इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजन विद एन एक्सप्लेनेशन. कंप्लेनेंट इज इन्फॉर्म्ड ऑन द डिसीजन कि आपने अगर कंप्लेंट करी है तो आपको एक प्रॉपर उसका एक आंसर मिलेगा कि व्हाई अ पर्टिकुलर पेपर हैज बीन रिजेक्टेड, फाइन, और देयर इज अ कंप्लेंट अबाउट अ साइंटिफिक कंटेंट. सो डिसीजंस ऑन अपील्स आर फाइनल. ठीक है, ये फाइनल है कि जो एडिटर इन चीफ ने कह दिया, यू हैव टू अबाइड बाय दैट. But this is for this particular journal that I'm talking, that is about Springer. Fine. Okay. अब देखिए ऐसा हो सकता है, there may be a complaint about the process. Example, the time taken to review. कि आपने एक पेपर दिया and there is it is taking a lot of time to review. They are taking a lot of time to review. तो आप उसके बारे में कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं? So the editor in chief together with the handling editor or in-house contact will investigate the matter. कि अगर आपने कंप्लेंट करी है तो जो भी एडिटर इन चीफ है उस पर्टिकुलर जनरल का, they will investigate into the matter. Fine. The complaint will be given, complainant will be given appropriate feedback. कि जो भी आपने कंप्लेंट करी है, for example, you have raised a issue, you will be given appropriate feedback. Feedback is provided to the relevant stakeholders to improve the process and procedures. अगर उसमें किसी भी तरह का टाइम डिले हो रहा है, then a feedback is going to be given to you. अभी मैं आपको ये सारा इसका एक फ्लो भी दिखाऊंगा एक डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, that how this particular process is going to flow when you are making a complaint. किस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक प्रोसेस का फ्लो होगा, कहाँ से आप इसको आगे भी जाके और अच्छे से पढ़ सकते हैं. So the next complaint could be about the publication ethics, researchers, authors और reviewers conduct. कि जैसे अभी मैंने आपसे बात किया कि publication ethics की complaint हो सकती है कैसे. The editor in chief or handling editor follows the guidelines that are published by the Pope. वो सारी guidelines को follow करेंगे जैसे मैंने आपको बताया. The editor in chief or handling editor may ask the publisher, fine, the editor in chief or handling editor decides on a course of action, और वो दोबारा से आपको जो complainant है उसको बताएंगे. अगर आप फिर भी dissatisfied हैं कि किस तरीके से complaint हुई, fine, then you can go to COPE, that is Committee on Publication Ethics. Fine, कि अगर फिर भी आपको लगता है कि there is some mishandling of your issues, then you can visit the COPE. So now moving forward, देखिए मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि देयर माइट बी कंप्लेंट अगेन ऑथरशिप, फाइन, कि ऑथरशिप के इश्यूज हो सकते हैं कि देयर इज ऑल द ऑथर्स agreed with content and that gave all the explicit consent to submit and that obtained the consent from the responsible authorities at the institute or the organizational level where the work has been carried out. कि जितने भी ऑथर्स हैं वो मतलब एग्रीड थे कि उन्होंने क्या कंटेंट दिया, ठीक है, एंड दे हैव टेकन द कंसेंट फ्रॉम द अथॉरिटीज बिफोर पब्लिशिंग अ पेपर. अगर आप ऐसा नहीं करते तो इवन अथॉरिटी और एन इंस्टीट्यूट दे माइट आल्सो गिव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू. वो भी आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंप्लेंट क्या है, टू वे प्रोसेस है. Anybody can raise a complaint, fine. So if you are not agreed with the institute or with the organization that you are working with, they might also raise a complaint against you. Because whistleblower can be anybody. It is recommended that authors adhere to the guidelines of authorship that are applicable in the specific research field. तो जितने भी हमारे authors हैं, they need to adhere to the guidelines. फाइन, की जितनी भी हमारी गाइडलाइंस है वो उनको adhere करेंगे that are applicable in their specific research. So there could be complaint against the authorship. Now अब देखिए जो हमारे ऑथर्स हैं, आप जिसका भी नाम दे रहे हैं, अभी मैं आपको ये केस भी दिखाऊंगा कि देर आर केसेस कि आपने किसी का नाम दे दिया, फाइन, किसी पेपर के अंदर, और वो ऑथर कह रहा है कि मैंने तो इन्हें कहा ही नहीं कि आप मेरा नाम जो है यहाँ पे दीजिए, या वो आपका पेपर रिजेक्ट हो गया उस जर्नल के अंदर, और फिर क्या हो रहा है कि बिकॉज ही इज अ वेल नोन
academician, fine. So the general का जो reviewer है वो उसको कह रहा है कि your paper has been rejected. वो कह रहा है कि I have not submitted any paper. So there might be a complaint against authorship. So all the authors, इसका हमें ध्यान रखना, all the authors whose names appear on the submission made substantial contribution to the conception or the design of the work or the acquisition, analysis or the interpretation of data. कि जितने भी हमारे ऑथर्स हैं उन्होंने एक सब्सटेंशियल काम किया हुआ है, उन्होंने अच्छा काम उस पेपर के अंदर किया हुआ है, उसके डिजाइन में, उसके कंसेप्ट में, उसके डेटा के एनालिसिस में. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया then there is no way that you are giving the name of a particular person. Drafted the work or revised it critically for an important intellectual content कि उन्होंने उसके अंदर प्रॉपर क्रिटिकल वे के अंदर काम किया हुआ है and they have given a very intellectual content on that particular paper. Approve the version to be published, agree to be accountable to all the aspects of work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved. When you are giving a paper, you are agree and you are accountable कि आपने जितना भी इसके अंदर काम किया है उसकी accuracy का, उसकी integrity का जो है you can be held accountable for that. यही मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि देयर आर डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ रिसर्च कि अगर मुझे कोई भी अकाउंटेबल कर सकता है फाइन क्योंकि ये मैंने काम दिखाया है दैट दिस इज माय वर्क then I can be held accountable for any miss wrong or miss judgment in that particular work. So contributors who do not meet all the criteria of authorship, they should be listed in the acknowledgement section. भाई तो जिन्होंने अगर ये काम नहीं किया आपके पेपर के अंदर तो आप उन्हें जो है ऑथरशिप के अंदर नहीं रखेंगे. You have to keep them in the acknowledgement section. So moving forward, so there might be complaints against disclosures and declarations. All the authors are requested to include. देखिए this is another very important point कि भाई आपने कहीं से funding ली, आपने कहीं से finance लिया, कौन सी organization आपके work को fund कर रही है, you should give a clear description of that. Fine, to study specific approval by the appropriate ethic committee for research involving human and animals. कि आपने जहाँ से भी कोई study specific approval लिया है, you should state that. Informed consent if the research involved human participant. आपके पास एक consent होना चाहिए अगर आपकी research में किसी तरह के human participants हैं. A statement of welfare of animals if the research involved animals. अगर वो animals के ऊपर करा है, अगर आप ऐसा नहीं आपके पास consent है, then anybody can raise a complaint. कि आपने एक रिसर्च करी एनिमल्स के ऊपर फाइन तो आपके पास क्या कंसेंट था, ठीक है, आपने क्या एनिमल वेलफेयर से उसका कंसेंट लिया. सो यू नीड टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. Work submitted for publication may have implications for public health or general welfare, and in those cases, it is the responsibility of all the authors to include the appropriate disclosures and declarations. तो ये आपकी responsibility है कि जो भी आप काम submit करा रहे हैं for the publication, fine, it should specify all the guidelines. So now moving forward, there might be complaints against data transparency. Fine, कि data transparent नहीं है कि all तो जितने भी authors हैं they are requested to make sure that all the data and material as well as software applications that support their published claims they comply with the standards. कि आप जो भी काम दे रहे हो, जो भी डेटा यूज कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है, it should comply with the standards. The journals may have individual policies on sharing the research data in coordinates with disciplinary norms and expectations. Fine. So there are norms which needs to be followed. So as a researcher, I need to check the instructions for the authors of the journals that you are submitting to specific instructions. So whatever data I am showing in my paper, it should be transparent. कि कौन से sources से आया, what sort of analysis is done. Fine. If my data is not transparent, then I am calling for complaints because anybody can complain against that particular thing. Fine. So moving forward, the thing is that so now again there might be complaints against authorship. So authors are strongly advised
to ensure the correct author group, corresponding author and the order of authors at the submission. कि देखिए जैसे अभी तो हमने डिस्कस किया था ऑथर्स के बारे में, अब मैं हम ये चाहते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर ऑथर ग्रुप लिया, क्या उनका ऑर्डर है, तो ये भी जो चीज़ें हैं आपको सबमिशन के टाइम पे proper way में, that is your responsibility, that you are showcasing that. Fine, so these things should be clear because बाद में there might be a dispute कि why my name is on the second one, it needs to be on the first one. There might be a dispute between the co-authors. Fine, so all these issues that are your issues and you need to solve them before publishing a particular article. अब ये देखिए बताएंगे भी the changes to authorship by adding or deleting the authors, कि आप बाद में authors को add कर रहे हैं, delete कर रहे हैं, ठीक है, sequence of author को change कर रहे हैं, they are not accepted after the acceptance of a manuscript. Fine, authors are not accepted. अगर आपने एक manuscript दे दी, the author's name will be published exactly as they appeared on the accepted submission. The name of all the authors are present, are correctly spelled, उनकी क्या affiliations है, ठीक है, and adding or deleting the authors at revisions stage are generally not permitted. Right? So reasons for changing the name, कि आप इनका नाम क्यों change कर रहे हैं, you should have a proper reason. So approval for change during the revision at the discretion of editor in chief. The journal may have individual policies कि वो बाद में उसके नाम को change करने देते हैं नहीं, तो आपने अगर एक पेपर publish करने से पहले जो उसका सीक्वेंस है ऑथर का, फाइन, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि उनका क्या डेजिग्नेशन है, उनका क्या एफिलिएशन है एक इंस्टीट्यूट के अंदर, यू शुड बी क्लियर ऑन दैट बिकॉज बाद में इट इज, इफ यू इवन रेज अ कंप्लेंट कि भाई देयर इज अ डिस्प्यूट विद इन द ऑथर्स और somebody else, so that will be resolved only by the the authors only, fine, and the general might not interfere in that particular thing. So you have to keep these particular points in mind. So there may be okay. So there may be complaints regarding authorship issues or disputes. So यही मैंने आपसे discuss किया. In the case of an authorship dispute during peer review or after the acceptance, the general will not be in a position. General इसे जो है entertain नहीं करेगा to investigate. Authors will be asked to resolve the disputes themselves. अगर आपके कुछ disputes हैं between the authors, अगर आपकी कोई complaints हैं within the authors, then you have to resolve it by yourself. If they are unable, the general reserves the right to withdraw a manuscript from the editorial process, or in case of a published paper, raise the issue with the authors institutions and abide by the guidelines. और अगर ऐसा होता है कि फिर भी आप उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो जनरल के पास क्या है, उसके पास रिजर्व है, राइट्स हैं उसके पास कि वो आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, आपका जो पेपर है, उसको विड्रॉ कर सकते हैं. तो ये सारी हमारे पास कंप्लेंट्स हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको अब इन सारी कंप्लेंट्स का एक फ्लो दिखाऊंगा कि आप इन्हें कहाँ से कैसे आप कंप्लेंट करेंगे, तो किस तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो एक जनरल फॉलो करेगा. तो सबसे पहली जो है हमारी जनरल अप्रोच टू पब्लिकेशन एथिक्स. Okay. We will discuss this flow again. So I think I need to let me move on. So मैं आपसे कुछ केसेस डिस्कस करता हूँ कि बिफोर कमिंग टू दैट पर्टिकुलर फ्लो, what are the cases. For example, there is a case, ये मैं आपसे वो केसेस डिस्कस कर रहा हूँ that are with the कोप, जो कोप कमेटी के पास है. फाइन, कि एक केस है रिडंडेंट पब्लिकेशन का, कि आपको पता होना चाहिए किस तरह की कंप्लेंट्स रेज होती हैं. तो एक केस है हमारे पास रिडंडेंट पब्लिकेशन का, that a general A received the letter from two readers. General A received the letters from two readers pointing out that the female component of a paper published was identical with the paper published in General B. मतलब दो लेटर के दो पेपर्स के अंदर, फाइन, कोई भी रिसर्च थी एक फीमेल कंपोनेंट के ऊपर, फाइन, तो वो
that there is a complaint that in both the paper that particular thing is same, it is identical, that these two paper, तो क्या हुआ, इन दोनों पेपर को अलग अलग रिव्यूअर्स के पास भेजा गया. फाइन. वन ऑफ whom felt that there was a great degree of overlap, दोनों के बीच में काफी overlap था. ठीक है, दोनों में काफी overlap था. The other agreed but suggested that the paper submitted to the general A had used a different statistical analysis. लेकिन वो कहता है कि भाई मैंने तो अलग statistical analysis का use किया था, and there is some other different statistical analysis. Fine. So even this case is till now with the court, that they are working on this type of terminology, that if there are two identical components, fine, and you are using different statistical tools to interpret the data, that might even cause for a complaint. Fine. So you should try to avoid such redundancies. Now, there might be a case uh, that is including authorship without the author's knowledge. So, without the author's knowledge, कि आपने किसी को author बना दिया without the author's knowledge, that case is also there in the court. A paper was rejected on the reviewer's recommendation. कि एक reviewer ने एक paper को reject कर दिया. The editor met one of the senior authors at the conference and out of politeness apologized for rejecting his paper, that आपका paper जो है reject हो गया. And that person was surprised why my paper is rejected. I have not even means written a paper. So this prompted the editor to write to all the authors. Now the editor is making a complaint, or he's writing to all the authors regarding the same. So these type of things they can arise. So I'll just I think I'll need to minimize my presentation, and let's see whether I can uh, go to this particular section, because okay. PDF is not opening. Okay, let's move forward. So there is another paper, there is another case that I'll discuss with you, is that a paper which discloses confidential material. Fine. Now, what this case is, what sort of a complaint is raised कि वो जो एक पेपर है वो कोई किसी तरह का confidential पेपर है, ठीक है. So in March 2000, author A submitted a research letter to General X on behalf of National Screening Program, or he submitted a paper. He also submitted a commissioned editorial to General Y relating to the same subject. He gave a same paper. Author जो है ये send it to both the articles to a recognized authority. Fine. Now this particular paper is having some sort of a confidential information, and somebody is asking that particular editorial group that what sort of techniques, um, what sort of techniques and tests are used in that particular confidential paper. Fine. And if that thing is told to somebody, that also comes under falsification, that you are disclosing some sort of a confidential material. Now, moving forward, uh, there is a case that a reviewer submitting for publication material uh, has been sent. He had reviewed. He had sent to the paper that he had reviewed. So the paper was sent to two reviewers. Fine. And the reviewers have published it without the modification. The paper was sent to two reviewers and was published after modification. So between acceptance and publication, some modeling technique that had been included in the original paper, कि मैंने starting में एक जो technique use की थी, now it is removed. Sometime after publication, one of the people who had reviewed the study submitted a letter to the publication that included this particular model. So original authors were rather surprised कि हमने ये चीज जो है पहले include करी थी, fine, but that paper was rejected at that particular time. Fine, but somebody else has used that particular technique, and now his paper is now accepted on those particular terms. Fine, so that is also a point that is of concern.
and that is a case that is there in the court. Now, just moving ahead. Okay, okay. The next uh, case is that is authorship dispute. Now, basically, what happens in this particular scenario? Uh, ये मैंने आपसे अभी भी डिस्कस किया था कि now I'm showing you the different cases that are there with the court. कि an article was published with three authors name. तीन authors का नाम है. Not all the authors' signatures have been included on the original submission letter. सभी के signature नहीं है. A complaint was lodged by Y who said that X had submitted the paper without either his consent or the Z consent or knowledge, and there were several specific errors and omissions. कि कई तरह के errors हैं, omissions हैं. Fine. So Y then submitted a statement for publication in the journal, disassociating himself from the published article. देखिए ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर इस तरह के cases होते हैं, then they need to be resolved by the authors only. And there is a terminology that is there that is called as ORCID. ORCID is like a digital signature. Fine, ORCID is a non-profit organization and it is using a sort of a digital signature that needs to be tied with the researcher's name. कि आपका एक researcher ID है, आपका एक unique ID है. Fine, you have a digital signature, and whenever you are presenting a paper, you are, for example, publishing a paper, sending it for publication. तो वो जो ORCID का ID है, वो उस paper के साथ क्या हो जाएगा? Attach हो जाएगा. To remove such sort of an authorship disputes, that you need to attach an ORCID ID. So a lot of good journals, they are taking the ORCID ID nowadays as a digital signature, fine, so that such sort of a disputes they can be minimized. Fine. So now moving ahead. So now moving ahead, there is also a case that a single author did randomized controlled trials. Fine, means no, this is a very important case that what happens in even in biology or in medical sciences. After a randomized controlled trial from a single author had been published, a letter was received in which the correspondent suggested that the original trial may be fraudulent. कि somebody raised an issue कि इन्होंने जो भी ये trial करी है, the original trial is fraudulent. Firstly, the writer claimed that it was highly unlikely that just one author could perform, कि एक ही person जो है इस तरह के randomized trial कर सकता है एक छोटे से hospital के अंदर. The correspondent was also worried that there was no mention of other standards of treatment. There is no mention कि what are the other standards of treatment. So this is again an issue that was raised. Okay. I'll just try to again share that particular thing. Okay. Okay. Now it's opening up. देखिए, this is a very important part which I want to discuss with everybody. Now ये जो है कि अगर आपकी इमेज के अंदर किसी तरह की मैनिपुलेशन है, there is a image manipulation in the published article. Fine. Okay. There is an image manipulation in this image manipulation in an article. How it can be resolved? For example, there is an image manipulation in a published article. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं तो क्या उसका फ्लो रहेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रीडर एक्सप्रेसेस कि कोप इस चीज को कैसे क्या हमारा फ्लो होता है इस कंप्लेंट का.
तो रीडर जो है उसने एक्सप्रेस किया देयर इज अ सस्पिशन ऑफ इमेज मैनिपुलेशन, कि किसी ने आपका पेपर पढ़ा और उसने ही इज अ विसल ब्लोअर, उसने कहा कि दिस इमेज इज मैनिपुलेटेड, फाइन. So what is the general doing? He's thanking the reader and states the plan to investigate. Fine. He took the opinion of another reviewer. उसने दूसरे reviewer का भी opinion लिया. Then he contact the author to explain your concern. Fine. It contact the author to explain your concern, but do not make direct accusations. वो starting में ऐसा नहीं है कि starting में ही आपको कह देंगे कि हाँ जी आपने image manipulate करी. Fine, there might be some area that you have taken or you have, might not given a proper source for that particular thing. Fine. So they need to contact the author to explain the concerns, but they are not making any sort of a direct accusations. Fine. Now, what is a response? If it is a satisfactory response, fine. Apologize to the author, publish correction if necessary. Example: an honest error has been detected. Fine, that do not invalidate the conclusion. Fine. If the answer is unsatisfactory, fine, that is a clear admission of image manipulation. Fine, and he's not giving any response. कि आप उनसे बार बार पूछ भी रहे हैं as a publishing house, but he's not giving any response. Fine. तो वो क्या करेंगे? They are going to contact the parties involved. For example, the your institute, fine, where you are working on, and if it is found guilty, author is found guilty of image manipulation, fine. So you need to, again, they are withdrawing the paper. If you are found guilty of that particular author is guilty of image manipulation, fine. And suppose you are not, आप उनसे contact ही नहीं करते, तो वो क्या कर रहे हैं? They are consider contacting the institution after every 3-6 months. Fine. So this is how a case of image manipulation. Fine, कि अगर आपने किसी भी तरह की कोई image जो है manipulated image जो है वो हो रही है किसी पेपर के अंदर, तो दिस इज अ वे, दिस इज अ फ्लो कि वो कैसे होगी कि पहले दे आर गोइंग टू आस्क द ऑथर, फाइन, इफ द आंसर इज सेटिस्फैक्टरी, फाइन, दे आर गोइंग टू रिजॉल्व द केस एट दैट. अगर इफ इट इज एन ऑनेस्ट एरर, फाइन, एक ऑनेस्ट एरर है वो डिटेक्ट हो गया है, फाइन, that does not invalidate the conclusions, कि कोई conclusions कोई hurt नहीं हो रहे. लेकिन if the author is found guilty, फाइन, अगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा, they are going to contact the institute again जिससे वो affiliated है for every 3-6 months, fine, and they are going to again withdraw the paper in that particular scenario. So this is a very important terminology that is in case of image manipulation. That I was opening from that particular window, but I was unable to open on that particular shell. So that is again okay. I'll also show you another one very good flow. That is, what do you see if you suspect the fabricated data? कि आपने जो है जो डेटा दिखाया है कि अगर किसी ने किसी भी पेपर के अंदर फैब्रिकेटेड डेटा दिखाया, व्हाट डू यू सी इफ यू सस्पेक्ट फैब्रिकेटेड डेटा, दैट समबडी इज देयर हु इज पॉइंटिंग आउट दैट the data that they are using is fabricated data. So suspected fabricated data in a submitted manuscript, fine. So reviewer expresses a suspicion on fabricated data. First of all, there is a reviewer who expresses a submission. You thank the reviewer. Consider the second opinion of another reviewer. Contact the author. Fine, here comes the author. But do not make again direct accusations. कोई सीधा direct accusations नहीं करेगा. The author replies, fine. If the answer is unsatisfactory and he admits the guilt, fine, then inform all the authors that you intend to contact the institution and regulatory bodies. Fine, contact the authors institution requesting for an investigation. Fine. If all these things are happening in this particular direction, then you can see the flow. If the author replies, you एक satisfactory explanation दे रहा है कि you apologize to the author, inform of the outcome, proceed with the peer review if appropriate. Fine. So you have to see as a general and as a person कि आप जो भी data जो दे रहे हैं, अगर वो fabricated data है, fine. So this is showing how the general is going to approach you. Fine. So there are attempts to contact all the authors, and this is a particular flow, and this is basically using the GMC, that is General Medical Council guidelines for the doctors of UK. So this is another particular area which is
which can be used in the information flow that is used by basically by the flow. So now moving forward, okay. So there are complaints that are related to misconduct. Okay, we have discussed that. So okay, now this is another important part. There might be a complaint against fake reviewer. कि जो आपका reviewer है, that is not that is a fake reviewer. Fine. Uh, because some generals they give, for example, suggest the name of potential reviewers. If you are submitting a paper in a particular area, the general might ask you to suggest the potential reviewers who can be there. This can help to identify the qualified reviewers or can broaden the general reviewer pool. So this will help. So editors they should take care to check the qualifications of all the reviewers before issuing an invitation to review. So there might be a case, you can lodge a case against the fake reviewer if a reviewer is there, fine, who is not from a proper institute or who is not proper qualified to judge your paper. Then in that particular case, you can raise a complaint against a fake reviewer. Fine, but it is especially important to verify the qualification of a potential reviewer who have been recommended by the authors. कि अगर आप कुछ reviewer जो है वो बता रहे हैं, then the general needs to check the qualifications of the author because उससे उनका भी जो reviewer pool है वो क्या होगा, that will be enhanced. So the editor should request an ORCID. यही मैंने आपसे डिस्कस किया था, ORCID, that is an online digital identifier. That is very important nowadays, an online digital identifier that distinguishes the researchers from one another. कि एक researcher को दूसरे researcher से distinguish करता है, एक researcher ID देता है, ठीक है, ताकि हमारे पास इस तरह के fake reviewer ना आए और ना ही हमारे पास इस तरह की complaints raise हो. Fine. So avoid using the reviewers whose background and institutional affiliation cannot be determined by a simple web search. फाइन. तो ऐसे रिव्यूअर्स को अवॉइड करना चाहिए कि जिसकी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन या इंस्टीट्यूशन एफिलिएशन के बारे में आपको प्रॉपर से नहीं पता और आप वेब पे भी सर्च करने पे उनके बारे में नहीं जान पाते. सो मूविंग फॉरवर्ड, देयर माइट बी अ कंप्लेंट दैट इज आफ्टर पब्लिकेशन. अभी तक तो हमने जो भी कंप्लेंट्स देखी वो हमने कंप्लेंट्स देखी कि रिव्यूअर की कंप्लेंट्स है, इमेज की कंप्लेंट्स हैं, फैब्रिकेटेड डेटा की कंप्लेंट्स हैं. अब हमारे पास एक कंप्लेंट है, जैसे हमने कंप्लेंट देखी कि अगर हमारे पास कोई सीक्रेट डेटा है वो डिस्क्लोज हो गया, हमने एनिमल वेलफेयर नहीं किया, दैट माइट बी अ कंप्लेंट अकॉर्डिंगली. देयर माइट बी अ कंप्लेंट आफ्टर पब्लिकेशन कि आपने कुछ पब्लिश करा दिया. देयर माइट बी अ कंप्लेंट आफ्टर दैट. अ रीडर में रेज अ कंसर्न अबाउट अ पब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट. कि एक रीडर ने आपकी मैन्युस्क्रिप्ट देखी, ही माइट रेज अ कंप्लेंट. द रीडर शुड बी आस्क्ड फॉर सब्सटेंशिएटिंग information and the author should be contacted to raise a concern. Fine. The author should be contacted. If the complaint proves to be unfounded, no action may be required. Fine. But agar if there is a complaint after publication, then three things, there are three options. आप जो है as a general you can publish a correction statement to include the information that this was missing. Fine. For example, there is a conflict of interest. Publish an expression of concern alongside the article कि ये जो आपने दिखाया है ये क्या है. This was found suspicions of misconduct. Fine. You can retract the published article. Fine. So these are the different terminologies that might be there. कि अगर आपने एक आर्टिकल पब्लिश करा दिया, आपने सोचा पब्लिश हो गया, इसके बाद तो इस पर कोई कंप्लेन नहीं हो सकती, तो अलग अलग जो पर्सन्स हैं, अलग अलग रीडर्स हैं, दे कैन ऑल्सो रेज अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट. तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो कंप्लेंट ठीक है, देन यू हैव टू पब्लिश अ करेक्शन स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा या तो टू द जनरल, और यू हैव टू पब्लिश एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न that particular thing is suspicious. Fine. And you can retract the published article. This may be appropriate for more serious concern कि आपने fabricated data या plagiarized material जो है use किया. You should inform the reader who raised a complaint of the outcome once the matter is resolved. तो इसमें क्या है कि आपको reader को भी जो complaint को raise कर रहा है, आपको उसको भी इसके बारे में बताना पड़ेगा. So if you have concern, you can contact your publisher. आप अपने पब्लिशर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, who can provide you legal support
if as an author you think that there is a misprinting or some data has been misinterpreted, then you can even contact your publisher and he can give you some sort of a legal advice on that particular आप issue. शेयर कर रहे हैं वो विजिबल नहीं है स्क्रीन पे. हाँ जी, पीडीएफ विजिबल नहीं है सर स्क्रीन पे. क्या आप स्लाइड्स विजिबल हैं? नहीं सर. बट आई थिंक मेरी तरफ से तो विजिबल है ये. मैं एक बार दोबारा से शेयर करता हूँ. एक फोल्डर दिखा रहा है आपका, एफडीपी का फोल्डर खुला हुआ है. नहीं नहीं, नहीं सर. जस्ट लेट मी शेयर. क्या आप विजिबल हो रहा है? हाँ जी हाँ जी, हाँ विजिबल. आई थिंक वो बीच में बैक ट्रैकिंग हो गई, तो उसी टाइम ही आपको कह देना चाहिए था. कई बार ये स्क्रीन शेयरिंग बीच में वो स्लो हो जाती है. क्या आप विजिबल हैं? सभी को स्लाइड्स विजिबल हैं प्रॉपर्ली? यस सर, इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. ओके फाइन. सो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है, दीज आर द कंप्लेंट्स आफ्टर द पब्लिकेशन. फाइन कि आपने कुछ पब्लिश कर दिया and your concern is that what you have published, fine, that is in that is not in that particular order, कि आपने वो किसी वो particular order में नहीं है. Fine. So how you can raise a complaint about that? If you have a concern, you can contact your publisher. Fine, कि जो आपको एक legal support देगा. You have resources for editors including the guidelines जो मैंने आपको अभी बताई, that is a committee on publication ethics. अगर मैं आपसे एक बात डिस्कस करता हूँ, bear in mind that the accusation of misconduct and subsequent action, they have such a retraction, they can have serious repercussions on someone's career. कि अगर आप कोई भी कंप्लेंट रेज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिसके ऊपर भी कंप्लेंट रेज कर रहे हैं, it could have a serious effect on his or her career. Fine. So you should keep in mind that whatever you are complaining against, so even when you are publishing something, तो तब भी आपको बात याद रखनी चाहिए. If I am publishing, if I'm giving a paper for publishing, so it might have a serious implication if that thing is plagiarized. अगर वो plagiarized है, किसी तरह के plagiarism में आता है, then it might raise a concern. Therefore, the complaints of author misconduct, they should always be handled with sensitivity, tact, and in confidence. Fine. ऐसा नहीं है कि वो सबको लेके बताएंगे. They should be telling you some particular thing in confidence. So now moving forward to appeals, कि अगर हम एक अपील कर सकते हैं तो किस एरिया में कर सकते हैं. So the general will consider the appeal against the editor's decisions only under highly specific circumstances and usually one where a clear breach of policy can be demonstrated. अगर आप कोई अपील कर रहे हैं against an editor's decisions, तो वो specific circumstances में ही लिया जाएगा. जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे for example there might be a case of rejected manuscript, कि आपने कहा कि मेरी एक manuscript है that is rejected. The most common reason for rejecting the manuscript are the article content is not with the scope of the journal. जो article का content है that is not with the scope of the journal, उस journal की scope में नहीं है. It is not written in a clear and intelligible English. That is very important कि आपकी अगर मैं आप कोई भी article लिख रहे हैं, then your English and language you should be very clear on that. Because a lot of international journals, they are asking for a very good command over the language, and then only you can write something good. Authors have not completely completed the relevant declarations related to ethics and funding. अगर आपने कोई declaration नहीं दी उसके against जो है authors ने नहीं दी, then you can also appeal that. The article doesn't conform to the guidelines for the authors in terms of content, style or formatting. अगर इसमें से कुछ भी issue है, then you can appeal against the rejected manuscript. कि अगर आपने लिखा उन्होंने कहा इंग्लिश अच्छी नहीं है, then you can appeal against that. अगर वो उसके स्कोप में नहीं है, then you can appeal against that. So these are the different terms that you can appeal against. So इसका भी हमारे पास एक जो है प्रोसेस है. The procedure applies to appeal in the editorial decisions. Fine, about the failure of a process such as long delays. The first instance to be handled by editor in chief. जो भी अगर कुछ किसी तरह का डिले हो रहा है, if they are the subject of the complaint, then please approach the in-house publishing contact. अगर वो भी आपके उस particular appeal को resolve नहीं कर पाते, then you have to move to the in-house publishing contact.
So I'll show you one important slide. Now this one. तो ये देखिए, because we are also moving towards end of this presentation and I want to give time for some queries and everything. So these are the different number of cases that are now with COPE. You can see this number is just very recent. Duplicate or redundant publications 77, ethical approval, no ethic approval 34, authorship issues, inadequate informed consent, falsification and fabrication, plagiarism, unethical research, undeclared conflicts of interest, fine reviewer misconduct, editorial misconduct, fine, and a lot of other issues. So you can see there is a broad spectrum of cases that are there. So I also try to discuss a lot of things कि आपसे मैं discuss कर सकूं किस तरह से ये duplicate publications के issues हो सकते हैं, authorship issues के cases हो सकती हैं, complaints हो सकती हैं, falsification के case हो सकते हैं, plagiarism के case हो सकते हैं. So the thing is that as a researcher, you should keep in mind when you are submitting a particular work, fine, that work is very honest, very true. It's not fabricated, fine. So these are the things that we need to keep in mind and adhere by, so that no complaint arises from other parties. But in case if your paper is rejected, or there is some sort of a publication error, some sort of an image manipulation error, then definitely you can move to court. Fine, there is some sort of an issues, authorship issues, conflicts of interest, overlapping papers, fine, in that particular case you can move towards court. So just ending my presentation and giving last 5 minutes for any queries or that. The conclusion is that though the research is supposed to be an honest pursuit of truth and problem solving, it needs to be an honest pursuit. The instances of misconduct in research are substantially large. जो हम research के अंदर हमारे instances हैं misconduct के वो बहुत ज़्यादा हैं, to call for appropriate action. तभी लिए अभी जो UGC ने ये include किया है, the UGC has tried to solve the above problems with COPE, regulation, core practices as discussed. But I would say that research ethics जो हमने सबसे पहले discuss किया था, it needs to be addressed as a solution. इसका जो एक ही solution है, that is research ethics, कि जो जितने भी researchers हैं, if they follow the research ethics, then a lot of problems can be resolved. So I end my presentation on this particular note. And if there are any queries, yes. If anyone has any queries, so you can write in chat box. Thank you, sir, for your informative and valuable lecture. Thank you, ma'am. It's our pleasure, sir. You accepted our invitation and delivered a lecture in yeah, short time. I'm thankful to BMU for giving me this platform, a virtual platform, so that I can express my views on this particular topic. Thank you to everyone from BMU, from the staff and the teachers. Thank you everybody for patiently listening to this particular topic. I know this is very hard to listen to somebody on a virtual platform. Fine. Sir, students are requesting that please share PPT. Definitely, ma'am. I'll share the PPTs with you. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. Hello, friends. Hello, ma'am. Hello. Hello, sir. जी राधिका मैम. Yes, sir. Dr. Nitish Kumar Saxena has joined us.
सर रिमी मैम अभी होस्ट करेंगे। नितिन कुमार सक्सेना जी। हाँ जी, रिमी मैम अभी होस्ट करेंगे, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर। हेलो देवेंद्र सर, हाउ आर यू? आ जाओ।